ब्रह्मा च लोकाधिपति सहमपति कतंजलि आंधीवरम अयाचत संत इध सता अप परा जखा जथिका देसे तु धम्मम अनुकंपिमम पजम. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So 2,500 years ago, the Buddha lived and taught not far from here, a few hundred miles away to the east, Bihar. Presented his teaching for the welfare of beings, those who could hear, those who could understand, those who were ready. The teachings were offered, and they were offered on many, many different occasions. He spent about 45 years after his realization, traveling, teaching, encouraging people in whatever way he could. And after his parinibbana, after he died, the teachings carried on. People carried on practicing and passing the teachings down from generation to generation. And the teachings were carried to different parts of the world. They carried to Sri Lanka, to Southeast Asia, to Thailand, Laos, Cambodia, then to China and Japan, up into Tibet, the Himalayan region, and more recently to the West, to Britain, Germany and Britain. And so, having grown up in a rather conventional family, in Edinburgh, in Scotland. My father was a lawyer. I had a good education, good Christian upbringing, and somehow by a series of coincidences, you could call them coincidences, events, things, internal processes in my own mind and heart, external events. I eventually met Ajahn Sumedho, an American monk. He grew up in America in quite a conventional background, traveled to Thailand where he heard the teachings, and then came to London. So these teachings that the Buddha presented that were transmitted over the centuries to different parts of the world. And what struck me when I first encountered them was just how relevant they were, how they seemed to answer the questions I had. It was the 20th century when I came across them, a 20th century middle class woman from Scotland
occupational therapist, helping professions, doing these things, and yet these teachings that originated so long ago seem directly relevant. So much so that I had no hesitation when the opportunity arose to enter monastic life and to devote all my energies to understanding and applying these teachings as best I could in order to find a way to live more peacefully and happily with myself and with the people that I was living with. And now, 21st century, here I am, not far from where the Buddha gave his teachings, sharing whatever understanding has arisen with all of you. In a way, it feels like a bit of a cheek. Coming from so far away to try to convey something of what I've understood from somebody who is a native of your country, who grew up with in similar circumstances. Well, not that similar, but the similar climate certainly, and but in a way, I suppose what we can gather from this is just how these teachings, they speak in a very direct way to what we all share as human beings. You know, human beings, we would like to be happy, we would like to not suffer. We don't want to feel pain, we don't want to feel confusion, unhappiness of any kind. We want to be happy, to live comfortably. And yet, as we've all discovered, you know, even if we have vast wealth, there are still ways that we can be unhappy. There's still struggles in the mind, uncertainties, confusions, fear about whether we're going to be good enough, whether we're going to manage, what we're going to do with our lives. Hearing about just terrible conflict in, not far from here in society, people actually killing each other because they have different faith, different understandings. So the world, when we reflect on it in this way, we can see that the world is, human beings are prone to making life extremely difficult for themselves, to causing enormous suffering for themselves, enormous suffering for those around them, because of not really seeing clearly, not really understanding the human predicament, and not understanding, not appreciating our capacity, rather than to do harm and to cause endless damage to ourselves and others, to actually promote well-being for ourselves, well-being for each other. And this is what the Buddha's teaching provides us with. The tools to support well-being, to support happiness. All that is asked is that we apply these teachings, that we contemplate our lives according to the directions that the Buddha offered. As we become aware of suffering, of dukkha, the encouragement is to look into it, find out about it, learn about it. What's the struggle? What's the fear? What's the anxiety? What am I wanting?
What am I wanting to get? What am I wanting to get away from or to avoid? Very, very simple. When we really understand suffering and its causes, and when we're ready to abandon those causes, then we have the chance to experience the peace of letting go. Deep peace and happiness that comes when we, really just when we establish presence. When we bring our awareness into the present moment, when we allow the mind to settle in the present moment, when we actually contemplate this moment as it is and find that everything that we need is right here. We don't need to get something or get rid of something. If we can just rest in the present moment, things as they are, we can find peace, well-being. We may not particularly like the conditions that we're experiencing. Nobody likes physical pain. Nobody likes a mind that's confused or upset about something, angry, fearful. But when we can really just establish presence with whatever the condition is, establish mindfulness, we find that even whatever state the mind is in, whatever state the body is in, there is a kind of a settling. As I told you, the very first retreat that I did with Ajahn, he said, well, if there's only one thing that you get from this, that you take away from this, it's and I'm not quite sure if I remember his exact words, but what I took from it was the significance of metta, of kindliness or acceptance or non-aversion, non-ill will. And these are different ways that this quality is spoken about. Sometimes metta is translated as loving kindness, which is very nice, but in certain situations that is, we simply don't have the capacity to do that, to love really unpleasant, difficult people, to love physical pain, to love being mistreated in one way or another. There's a very powerful simile that the Buddha gave that I reflect on, where he talks about this quality of metta, of non-ill will. What he says is that even if robbers grab hold of you and start sawing off your arms and legs, it's pretty powerful, isn't it? If you allow a single thought of ill will towards your aggressors, you haven't understood my teaching. So how on earth are we to understand that? Really? It's interesting, from my Christian upbringing, there's a fairly similar event described when Jesus was crucified, and they actually hammered nails through his hands and his feet and onto a kind of cross that was made out of a piece of wood, and sort of stood the cross up, and he was just hanging there.
And what he said, which is again a very powerful example. And he, as you know, Jesus was, he was described as being the Son of God, and what he said was, Father, meaning God, forgive them, because they don't know what they're doing. They don't understand the implications of what they're doing. So please forgive them. So he was asking God to forgive the people who were torturing him in this way. So this metta is an extremely powerful force in the world. Obviously, we can have metta for all kinds of things. We can have metta. Certainly, there are plenty of very nice things we can feel loving towards. We can feel a sense of kindness, a natural inclination to want to kind of cuddle and nurture and support. But how do we manage with people or situations who are not behaving in ways that we find supportive or helpful, who are not kind, generous, loving in the way that would make us feel good, would make us feel comfortable? How do we bring forth a sense of kindliness towards them, or at least avoid falling into a state of aversion or negativity towards them? It's interesting, when I spoke the other night about the hindrances, I don't know if you remember what the Buddha said about aversion or ill will. He said it's like a disease. And of course, if we're not mindful, or if we're not aware of the harmfulness of such thoughts, we can allow our whole lives to be ruined by some kind of vengefulness, some kind of ill will. If somebody has done something very, very harmful to either to ourselves or to somebody that we love, somebody we care about, or our family or whatever, it's quite normal to feel some very negative, bad feelings towards that person, those people. You can feel it towards a whole race. And it probably doesn't do them that much harm, our ill will. Wouldn't do them any good. But much more significantly is the harm that it does to us. So when we experience such emotions, over major incidents or events in our lives, or even trivial things, we can be upset by very trivial things. What we need to do is to consider, how can we bring forth kindness? How can we avoid falling into a state of negativity or ill will? One of the things I find helpful in my own practice is to consider that this ill will, like there's a chant that we do where we talk about bringing forth metta into our hearts and radiating it in all directions. And above, below, around, all around. Basically towards all beings, just as the same as we would to ourselves. So we may not be able to feel a sense of kindness or non-aversion towards the other person to start with,
But if we begin by just acknowledging our own struggle, our own confusion around what's happened, our own sense of anger, and see if we can replace that with a thought of kindness towards ourselves. A kind of acknowledgement that this, in fact it's very close to compassion, in fact, when we think of it in this way. So if I'm hurt or angry or upset, can I just acknowledge that this being is hurting, is struggling? Can I bring forth a sense of kindness rather than saying, oh, Chandasiri, you should forgive them, you must forgive them. The Buddha said forgive. Sometimes we can't do that, not straight away. It can also be helpful to consider ways that perhaps we've hurt other people, things that we've done. I do this sometimes, like sometimes in community things happen that seem really unfair. Maybe people pick on me. Like sometimes I've been in the position of being like the senior nun, the most senior nun in the community, and when you're the most senior person, you're a wonderful kind of scapegoat. People pick on you. And there have been times when there have been, quite major misunderstandings. As I might have said, our communities, in our nuns' community, practically every single nun comes from a different country, different nationality. We're very international. There's not very many of us, but each one comes from a different country. And there are very few whose native language is English. So we have all different languages. So things can be very easily easily misunderstood. And so there can be difficulties. And sometimes when that's happened and when people have been picking on me, blaming me for something, rather than blaming them back or wanting to hurt or punish them, I did tell you about one person I wanted to hurt, but this is a different example. Not necessarily wanting to hurt them, but sometimes I remember times when I've hurt somebody else in a similar way, treated somebody else badly. It may be long ago, but an incident may come to mind. And so I see if I can forgive myself for having caused harm to someone else. So bringing forth a heart of kindness, of non-ill will, firstly towards myself. And then when I can do that, what happens quite naturally is that there's the capacity to accept what others have done. It's interesting with practice, as we really begin to look into our lives and contemplate the dukkha, the suffering, the difficulties, the fears, anxieties and concerns that arise for us, the harmful impulses that we have, the foolishness, the ways that we misjudge situations, there's much less of a tendency to blame or judge others, because what happens for us, well, for me, I've found, is that I'm aware that in other circumstances I could have done exactly the same thing. If I was frightened or confused, jealous or angry about something, I could just as easily have hurt somebody. This tendency we have to see people as other, rather than a brother or a sister in the human race. So this quality of metta, of non-ill will or acceptance, acknowledgement, kindness, seems to arise when we actually begin to see all other human beings as human beings who are struggling with the same difficulties that we struggle with.
It's very difficult to when we see somebody as a brother or a sister, there's much less of an inclination to hurt or to harm. Whereas when we just see them as the enemy or them, the bad ones, the aggressors, we use that kind of language, then we can do terrible harm to them. Because they're threatening me, they're threatening my people, they're threatening my country. But if we recognize that they're human beings just like us, fathers, mothers, sons, daughters, then it's much more difficult. This is the first of what we call the brahma viharas. These, like Brahma is these Brahma gods are like sort of divine beings in the Buddhist cosmology, and they're very, very high beings, and they have limitless radiance, very, very this capacity to generate qualities of kindness, compassion, joyfulness and serenity in all directions, infinitely, immeasurable kindness. Can you imagine immeasurable kindness? So these are qualities that we cultivate in our practice. These are qualities that we can use, that we can cultivate quite consciously. They're qualities that we can bring into our meditation, that we can bring into our everyday life. We can contemplate them in our everyday life. The possibility of letting go of ill will and hatred, aversion, negativity, vengefulness. And instead just seeing beings as just suffering human beings who want to be free, who want to be happy, just like us. It's very closely linked with patience, like just the willingness to stay present when conditions are difficult. Like in our meditation, say, sitting here, maybe our knees are painful, maybe our mind is painful, maybe we're just feeling thoroughly fed up. And when we think about metta, just we can actually use words like, may this being be well. Instead of just feeling miserable and fed up and wanting the meditation to end, you can just quite consciously bring up a thought of kindness. May this being be well. May this being be well. May this being be at ease. So we can do it here on the retreat, and you can do it in your daily lives. If you're anticipating a difficult situation, you can sort of think of the situation, oh dear, how's it going to be? Will I be all right? And you can worry about it if you like, or you can quite consciously and deliberately replace those thoughts of worry with, may this being be well. May this being be at ease. So there are many, many ways that we can apply metta or kindliness in our lives. Karuna is the word which is translated often as compassion. This is the second of the Brahma Viharas. And I've also heard compassion spoken about as, like kom means with, passion is feeling, so feeling with somebody. Compassion is often misunderstood as like pity. P-I-T-Y, not P-I-T-I. P-I-T-Y, feeling sorry for somebody. And I don't know about you, but if people feel sorry for me, I don't actually really like it very much.
Sometimes people will say, "Oh, you poor thing." That doesn't actually lift me up. It doesn't actually bring a sense of support. It makes me feel kind of patronized, actually, in a way. And when people say, "Oh, you poor thing, I'm going to help you. I'm going to be compassionate towards you," you think, "Go away." I don't need your compassion. I don't need your pity. So we need to look deeper. We need to consider what this really means. It's like when we think, "Oh, you poor thing," it's like me being separate from you and I'm going to help you. But when I've considered it in my own life, my own practice, when I've experienced it, like there's been times when I've been extremely ill, and it's been interesting noticing what happens when different people come to visit. And there are people who definitely sort of say, "Oh, you poor thing, I'm going to help you." And that brings one reaction in the heart. There are other people who are able to just be quietly there. It's almost as though they kind of are willing to enter into the pain and the discomfort of the situation. So all of us in our lives, we come into contact with people who have difficulties of one kind or another. Sometimes quite extreme, quite terrible situations. As nuns, we're quite often called upon to be with people who are very, very sick or dying, or people who are bereaved. And what I found can happen in such a situation is you can feel awkward. "Oh dear, I'm the nun. I'm supposed to be the one who's saying something wise that's going to make everything all right. And this is what people are expecting of me. Me and this situation." However, what I found is more helpful is to actually begin with having compassion for this being. To actually tune in to the sense of helplessness, the sense of awkwardness, the longing to be of service, but the not having a clue what's going to be helpful, and just to be with that. To sit quietly with the person or in the situation, to allow that sense of helplessness, that sense of not having a clue, and just to gently breathe and relax with the people who I'm sharing the space with. Entering into their space, entering into their struggle. When I've been sick and people have come and who've been able to do that, what happens is that there's actually a sense of restfulness and ease that can come into the heart. It's almost as though we kind of pick up on each other. So when I'm with someone who is struggling, if I can cultivate a sense of inner ease and restfulness, then that somehow or other, it's transmitted. We're all feeling it together. As I said, compassion, feeling together. If there's something practical that needs to be done, then we can do it. If there's nothing to be done, but maybe something to be said, it gets said. It's letting go of that awkwardness and just allowing a sense of compassion for the awkwardness that this one is feeling, the helplessness that this one is feeling. And from there, there's the capacity to enter into the suffering, the difficulty, the painfulness of the situation. I went to a conference one time of hospital chaplains. And there was this one fellow who was worked in I think it was an intensive care unit. And there was a big emergency. Somebody had been brought in and
there was big drama, and so this chaplain, he kind of went and he stood there, and the doctors and the nurses were sort of doing stuff, and the patient was going through whatever they were going through, and huge commotion. And so he was just standing there, and then eventually they kind of finished all the kind of interventions they had to do, and they said, "Oh, well, Father, now you can say your prayers." And he said, "Well, that's what I've been doing." Just being there, bearing witness, entering into a situation of great turmoil and struggle. A willingness just to be quietly there. So it's good to not underestimate the power of a willingness just to be mindful, just to be present in situations, in extreme situations. When we're present, then if there is something to be done or said, we do it or say it. And if there isn't, we're just quietly there. Certainly, as I said, in my situation, when I've been in such situations, that's much more supportive than somebody who's just frantically, busily trying to find something to do so they don't have to feel helpless. Doing something rather than doing nothing. But often doing nothing is better than doing something. So considering compassion, karuna, it's just another way of looking at it from what might seem to be the usual understanding, which can often be much more active. It doesn't mean that there's anything wrong with helping in people who are having a difficult time. I'm not saying that we don't do things, we don't offer service in situations, but this is just an alternative way of looking at certain situations where, first of all, we need to tune into our own struggle, our own sense of helplessness and unease. And that's what enables a coming forth from a much more grounded, much more peaceful, much more attuned place to what's really needed. Mudita is gladness, and this is the third Brahma vihara. Mudita, gladness, and the way it's translated and presented is gladness at the good fortune of others. And this is one that I've always been struggled with, because I was prone to jealousy, and so when somebody else had something that I thought I didn't have and that I wanted, it was extremely difficult for me to feel gladness. I used to say to people, how on earth can you feel glad when somebody's got something that you want and feel you haven't got? And they say, oh, well, you just think about how wonderful it is, how lovely it is that that person has this thing. And I thought, no, I can't do that. I want it. So with mudita, again, I found what works is to begin with this one. Can I have mudita for the blessings and good fortune of this one? Can I count my own blessings? And when I can do that, it's not difficult to feel gladness for the blessings of the lives of others. It just kind of comes forth. So fortunately, I'm happy to say it doesn't happen very often now, but sometimes just little, it's kind of there hovering. Used to be a huge green monster that used to kind of take over completely, but no, it's just little shadow hovering, so I sort of say, okay, so what's needed here? Mudita. Okay, so what have I got to celebrate? And when I look into my life, I have a great many things to celebrate. So I celebrate those. And then the shadow vanishes. There's no space for it. And there's a sense of gladness and a sense of empathy and happiness
for the good fortune of the other person or the situation. It's a tricky one because we're brought up to be very competitive, to do well at school, to be the best, or to be the best in sports, for our team to win. We don't want the other team to win, we want to win. Or we want our children's team to win, or our children to be the best. We don't want other people's children to be better than our children. So I think for all of us, these are things that are relevant in different ways. Jealousy is such an ugly thing that it can be very difficult to acknowledge. It's one of those very ugly emotions. And if we have it, we do everything we can to cover it over, to mask it. We don't want to show that we're jealous. It's interesting, I hardly ever heard people teaching about jealousy or talking about it. And I think it's because it's very prevalent and it's very difficult to admit to. But I was lucky. Before I was a nun, I had a boyfriend, and he always knew when I was jealous. But he always knew when I was upset. Actually, let's get it right. He always knew when I was upset. And he wouldn't let me pretend that nothing was wrong. And he would make me acknowledge what it was, which was always very, very difficult. I never wanted to acknowledge that I was jealous. But until I acknowledged it, he wouldn't leave me alone. And the beautiful thing about it was that he never blamed me or humiliated me or made me feel bad about it in any way. There was a kind of acceptance, enormous metta, enormous kindness. And I've always been grateful for that, because even though it's ugly and embarrassing and I don't want to acknowledge it, that actually enabled me to begin to take more of an active interest in it and to learn about it. You know what I keep saying about learning about our dukkha, learning about our suffering, and that was huge suffering for me. And that gave me the space, the capacity, the heart that would be able to look into it, to understand it. So now I talk about it quite a lot because, as I said, I think it's quite prevalent and it causes such misery. And the only way out of it is to acknowledge it. And what I've found is to actually apply the antidote, which is to cultivate mudita towards this being, to count our own blessings. And then there's a joy. There's a gladness and a joy. There's so much joy when you see how other people are blessed. And even if they're blessed with something that you'd quite like to have, you don't mind, because I've got plenty of blessings. There's plenty of good things in my life. So I have plenty of space to enjoy and to celebrate the beauty of others' lives. So I get an awful lot of enormous joy from seeing all of you actually practicing, and going to the park and seeing you, enjoying being in the fresh air, enjoying, taking it seriously and obviously benefiting from it. It just brings so much joy. So this is an interesting one, mudita. To others as to myself as to others. Upekkha is the final brahma vihara, and it's considered to be a very evolved state, because upekkha is the capacity of the heart to experience the joys of humanity, the beauty, the brilliance, the wonder of humanity, and the worst kind of sufferings of humanity. The Buddha himself, he could do it. His heart was big enough. He had the capacity.
it's something that I think evolves over our lives. And it's something that we need to, well, this is my experience, something that sometimes we need to know how to protect ourselves. Because sometimes the kind of suffering that we hear about or that we see is just too much. You know, I've heard of situations like, I think when the tsunami happened in Thailand, you know, people would go to try to help. And for many people it was just too much. They just couldn't. And so to realize that when there's really extreme forms of suffering, we need to find ways to protect ourselves, to look after ourselves, to actually seek help in bearing it. Otherwise, it can just leave us in a very traumatized state. So I always think, and I remember meeting with a group of hospice nurses one time at Chithurst, you know, people whose work was to be with people who are terminally ill and dying, and to be with their relatives. And I asked them, I said, well, you know, do you have support with this? Other people who can help you to bear it? And it was clear that some of them were managing fine, some of them had ways of dealing with it. For some of them it wasn't very fine. They'd taken on more suffering than they could actually deal with. Obviously there are situations in life where we don't have any control and where it is, you know, more than anybody can possibly bear. And when that happens, we need help. We need help to deal with it, to process it. I can't understand. I mean, I think there are many movies nowadays. I don't go to the movies, I don't go to films, but I know before I was a nun, you know, there were some films I just wouldn't go to because there's such graphic portrayal of the most ghastly, horrible suffering, people doing terrible things to each other, people going through really dreadful, dreadful suffering. And I knew I didn't have the capacity to bear it. It's interesting that upekkha is translated sometimes as indifference. And I can see how it could be interpreted like that. And I think indifference is the only way that people, say, in certain professions are able to manage, you know, sort of, you know, people who see suffering every day on a regular basis. They have to somehow or other desensitize themselves. They have to find a way of not entering into the suffering, but just keeping it at arm's length. But for all of us, you know, when we practice meditation, when we attune to our own suffering, our own joys, our own sorrows, there is a kind of sensitivity that comes about. And my sense is that the highest form of upekkha is an extreme, perfect sensitivity, an attunement, but also a capacity. So we have to know our capacity, know our limitations, what we can bear, what we can expose ourselves to. And ultimately, like the upekkha is like I always say it's the fourth brahma vihara, it's the seventh enlightenment factor. It's the can't remember all the others, but it's a very evolved state. So don't worry if there are situations that are too much, if you have to withdraw, if you aren't able to deal with it. You know, this is
perfectly understandable. Don't worry if you have to find ways to protect yourself, to shield yourself. That's wisdom. And recognize that little by little, as we grow in Dhamma, the capacity to bear with, to experience the delight, the joys, and to bear with the sorrows increases. Our capacity grows. So these are some reflections on the sublime, divine abidings, and these are just thoughts offered for your contemplation. These are qualities that are definitely needed in the world at this time. So, any little development in your own heart, in your own practice, in your own lives, in your families, your jobs, see if you can generate kindness, compassion, joyfulness, and serenity wherever you find yourself, whatever you're doing. And make sure that you don't forget to include yourself. And if it doesn't seem to be coming, then consider, am I including myself? Maybe I need to begin here in order for the actual radiance to come about. So these are thoughts I offer for your contemplation this evening. Don't need to bow for this one, Payal. Handmayam Dhamma Kathai Sadhu Karam Dadamase. So I think it would be good to sit for a short while, and then we can chant the suffusion with divine abidings. Okay, we'll begin with question answers. तो आज दोपहर के जो प्रश्न उत्तर का सेशन था, उसमें सबसे पहला प्रश्न था कि क्या ये संभव है कि हम भविष्य और भूतकाल को वर्तमान में एक्सपीरियंस कर पाएं, देख पाएं। तो अजान ने कहा कि अगर हमने कुछ भूतकाल में किया है और वो सब कुछ सही गया या उसमें कुछ सही नहीं गया, तो उसको रिव्यू करके देखना कि उसमें क्या, अगर कुछ गलत हुआ तो क्या गलत हुआ, और अगर सब कुछ सही गया तो क्या सही गया। तो ये सब एक निश्चय ही अच्छा परिणाम लाने वाला काम है, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर कोई आगे की बात हम सोचते हैं, जैसे कि फ्यूचर में कुछ करना है, तो उसके बारे में प्लानिंग करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हमने रिट्रीट को नियोजित किया, तो इसके लिए कुछ प्लानिंग गई, कितने लोग होंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे आना जाना होगा, तो ये सब किए बिना इस रिट्रीट की सफलता संभव नहीं थी। इसके साथ साथ हमें जो हमारी ऊर्जा है कुछ होने की, और कुछ बहुत ज़्यादा चिंतित होना भविष्य के लिए कि भविष्य में क्या होगा, जब संभवतः कुछ चीज़ें वैसे नहीं होंगी जैसा हमने सोचा था, तो उस स्थिति में हमारा एक लचीलापन होना कि कुछ अलग परिणाम आए जो हमने नहीं सोचे थे, तो भी उसके अंदर हम अपना विवेक न खोएं, हम अपना जो दृष्टा भाव है वो बना के अपने आप को किसी भी तरह से अपसेट होने से बचाएं। फिर अगला सवाल था कि आज सुबह आपने
बताया कि अंदर एक दृढ़ता होने के लिए, एक दृढ़ हृदय होने के लिए, कि जो बाहर के किसी भी परिस्थिति से उसके ऊपर असर ना पड़े, तो उसके बारे में आप कुछ और बताएं। तो अजान ने महामग्ग सूत्र से शिला, समाधि और पन्या और इनकी हमारी समझ को और बाहरी चीज़ों को, प्रकृति के बदलते हुए उतार चढ़ाव को दृष्टा भाव से देखना, इसी से हमारी जो एक सुदृढ़ शक्ति है वो धीरे धीरे बनेगी, बलशाली बनेगी और अधिक उसमें बल आएगा। अब इसी को हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर दिल्ली की रोड्स पे, गलियों में अगर हम घूम रहे हैं और देखते हैं कि बहुत सारे व्यंजन बने हुए हैं जो हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है और हमारा उनको खाने का मन कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर चाहें तो हम रुक सकते हैं और हम उसका आनंद उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारे लिए सही है? तो ये सोचने की बात है। तो जिस तरह से हम अपने दृष्टा भाव से उन चीज़ों को देखते हुए भी ये निश्चित करेंगे कि हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं, उसी तरह से हमें अपने विचारों को और अपने आसपास जो कुछ भी बदल रहा है उसके अंदर अपने आप को स्थित रखना, सुदृढ़ रखना, ये हमें इन तीनों शिला, समाधि और पन्ने से इसका अनुभव होगा। और दूसरी बात अजान ने बताई कि जो सबसे हमारा धम्मा है, वहाँ पर अगर हम शरण लेते हैं तो उस शरण से अच्छी कोई शरण नहीं है। और उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनके लिए तो ये शरण ही, उनके ये विश्वास ही उनके सब कुछ सही होने का एक कारण है। ये जो एक स्थिर हृदय होना, एक पॉइंटेड स्थिर हृदय होना, ये एक कवच की तरह है और उससे हम कोई भी रिएक्शन करने से बच सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये एक इंटेलेक्चुअल को, हाँ, ये एक बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं है, ये उससे बहुत बहुत गहरी है। अब जैसे हम रिट्रीट में हैं तो यहाँ पर स्पेशल कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर हमें एक मौका मिला है अपने मन को शांत करने का, और उसमें हम प्रज्ञा से हमारा रिस्पॉन्स आता है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम पागल हो गए हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपने आप को एक स्थिर हृदय बनाना है तो इसके लिए हमें अपनी शील, समाधि और पन्ने की जो प्रैक्टिस है, जो दिनचर्या में बार बार उसके निरंतर प्रयत्नशील रहना है, वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और इसके लिए ये हमारी एक जिम्मेवारी भी है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मॉनेस्ट्री में एक बहुत ही सख्त रूल था कि कोई भी बाहर बिना किसी के साथ, कोई नन बाहर नहीं जा सकती। तो कभी कभी ज़रूरी हो जाता था कि किसी को अकेले भी बाहर जाना पड़े, तो इसके लिए उस रूल को फिर से देखने की ज़रूरत पड़ी कि उसे बदलना चाहिए या नहीं। तो अजान ने उसके लिए एक सर्वे किया और उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों से और पुलिस से भी बात की, और उन्होंने जब बातें की तो उनको पता लगा कि जो सबसे कम बचावशील स्थिति होती है वो उन लोगों की होती है जो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया हो, किसी वजह से उनको कोई फीलिंग ऑफ हर्ट हो, मतलब चोट हो, दिल की चोट हो जैसे, तो उसमें उनको नुकसान होना बहुत आसान होता है। और उन्हें ये सुन के बहुत संतोष हुआ कि जो उनको एक अंदर से आवाज़ आती थी कि
सबसे अच्छा बचाव माइंडफुलनेस है, अपना दृष्टा भाव रखना है, वही उनको पुलिस से भी पता लगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उस रूल को थोड़ा बदला गया, और साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब बुद्धा के समय में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते थे, क्योंकि उस समय जो वातावरण था वो नन्स के लिए इतना सटीक नहीं था कि वो अकेले जा सके। फिर एक फॉलोअप क्वेश्चन था, तो अजान ने शिला और समाधि और शिला और पन्या के ऊपर सवाल था कि इन दोनों को साथ साथ शील और पन्या, तो ये सवाल था कि शील और पन्ने को साथ साथ लेना चाहिए क्या। तो अजान ने इसके बारे में ये बताया कि हमें इन दोनों को एक साथ ही, ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं और हमें इनके साथ ही इसी तरह से इनको देखना चाहिए, और किसी भी शील के साथ हमें एक तरह से चिपक नहीं जाना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि कहीं एक मोनेस्ट्री में बहुत बड़ा खाने का ग्रास नहीं ले सकते, तो एक नन को ऐसा लगा कि सबसे सही ग्रास है क्या, तो उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया और वो उनको बहुत ही चिंतित कर रहा था। तो उस चिंता से निकलने के लिए उनके जो एबट थे उन्होंने बताया कि आप आधा चम्मच है उसको मान लीजिए कि सही है। तो इस तरह से भी कभी कभी इन चीज़ों को देखना पड़ता है। दूसरा उन्होंने कहा कि कभी भी आप किसी शील को बिना पूरी समझदारी के ना तोड़ें, और अगर कोई शील आपको और आपके आसपास के लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल, मतलब बहुत बेचैन करता है, तो उस केस में उसको एक बार दोबारा देखा जा सकता है कि उस शील को रखना है कि नहीं। और उसका एक संदर्भ उन्होंने बताया कि एक अफ्रीकन, जैसे रंग भेद के कारण उन्होंने किसी अफ्रीकन से हाथ नहीं मिलाया, तो जो अफ्रीका निवासी था उसको ये लगा कि उन्होंने उसके साथ एक तरह से, हाँ नहीं बता रहा हूँ, हाँ, तो क्योंकि उनका नियम था तो उन्होंने तो उस वजह से नहीं लगाया, लेकिन जो अफ्रीकन सिटीजन थे उनको लगा कि उन्होंने उनके साथ भेदभाव किया है, और उसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो गए। तो अजान ने कहा कि ये वो कभी ना होने देती अगर उनको पहले से ही पता होता कि इस तरह से वो इस बात को लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कोई खास बात तो थी नहीं कि मैं हाथ मिला लेती, और अगर ज़रूरत थी मैं हक भी कर लेती, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि वो व्यक्ति इस तरह से समझता कि मैंने उसके साथ कोई अन्याय या कोई सही प्रकार का बर्ताव नहीं किया है, या उसको अलग तरह से। थोड़ा और इस पे क्लैरिफिकेशन फिर उन्होंने इस तरह से दिया, एक और सवाल के उत्तर के रूप में, कि आप शील को एक बचाव की रेलिंग की तरह मान सकते हैं, कि जैसे अगर आप किसी पुल के ऊपर से जा रहे हैं, दोनों साइडों पे आपके बचाव के लिए रेलिंग लगी हुई है, तो उसको आप तभी पार करें अगर आपको मालूम है कि उसके साइड में जाने से भी आप ठीक होंगे। और फिर उन्होंने भगवान बुद्ध का ये वक्तव्य याद कराया कि आपको अपने आप को सबके सामने भी और एकांत में भी ट्रेन करना है। उसके बाद एक सवाल था कि हम अपने कैसे हमारे शील हमें बचाव में मदद करेंगे जब अलग अलग तरह के धर्म और उनके बीच में मतभेद के कारण ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकता है। तो उस केस में कोई आप गाइडेंस देना चाहेंगे, या बुद्धिज़्म में इसके लिए कोई एक रास्ता बताया गया है? तो अजान ने जिक्र किया कि उनकी अपनी ज़िंदगी में कभी, उनके जीवन में कभी उनको इस तरह की कोई
सिचुएशन में जाना नहीं पड़ा है, लेकिन हम इसका एक तरह से विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या हम जो होने वाला है उसको अपने एक मनगढ़ंत तरीके से बना रहे हैं जबकि वो हुआ ही नहीं है, और उसके बारे में चिंता कर करके अपने आप का जो समय है और अपना जो विवेक है उसे नष्ट कर रहे हैं, अनहोलसम कर रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया फिर कि एक बार उनको एक जो अमरावती मॉनेस्ट्री जहाँ पे वो हैं, तो वहाँ पर उनको एक मीटिंग में जाना था और उनको मालूम था कि ये मीटिंग बहुत ही सेंसिटिव, बहुत मुश्किल मीटिंग है। तो उनके पास दो ऑप्शंस थे। एक तो ये कि वो अपना सारा दिन इस चिंता में बिताएं कि पता नहीं उस मीटिंग में क्या होगा, या फिर वो वर्तमान में दृष्टा भाव बनाए हुए उस मीटिंग के लिए तैयार रहें। तो उस दिन उन्होंने दूसरा चुनाव किया कि मैं चिंता में नहीं रहूँगी, और वो अपनी साधना करते हुए, जो हम वॉकिंग मेडिटेशन, पद यात्रा करते हुए साधना करते हैं, वो साधना करते हुए पूरे अपने अटेंशन के साथ, मतलब उनको महसूस हो रहा था कि उनके पांव रखे जा रहे हैं, उनको हवा का एहसास है, और जब वो मीटिंग में पहुंचे तो उनको मालूम है कि उन्होंने कुर्सी को खींचा है, फिर उसके ऊपर बैठे हैं। तो इस तरह से वो पूरी तरह से दृष्टा भाव में थी, और वो मीटिंग एकदम सही गई, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो ये उदाहरण एक है कि अगर हम हमेशा अपना दृष्टा भाव बनाए रखेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सकते हैं। एक और उदाहरण उन्होंने फिर दिया कि एक बार उनको एक फ़्लाइट पकड़नी थी, और अलार्म जो लगाया उस टाइम पे ना उठ के वो उसके करीब 45 मिनट बाद उठे, और फिर देखा कि अब उनके पास पैसा भी नहीं है तो टैक्सी भी नहीं ले सकती, और उन्होंने जिस तरह से अपना समय प्लान किया था कि वो चल के जाएंगी बस स्टॉप पे और फिर बस लेंगी, तो फिर उन्होंने फिर भी उन्होंने उठने के बाद चाय पी, अपने आप को स्थिर रखा, और जो कुछ उनको ले जाना था वो उठा लिया, बेड अपना वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि समय नहीं था, लेकिन वो अपने जूते के फीते बांधना भूल गई और उसकी वजह से 2 बार गिरी। और फिर उन्होंने अपने आप को रोका और कहा कि नहीं चांदसरी, आपको अपना जूते का फीता बांधो उसको और उसके बाद चलो। तो वो उन्होंने किया। फिर उन्होंने देखा कि एक बस है, लेकिन वो बस तो निकली जा रही है क्योंकि वो वहाँ तक पैदल पहुँच नहीं पाएंगी। तो उन्होंने फिर वहाँ पहुँच के दूसरी बस ली, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे वाक्य में वो कहीं पर भी अस्थिर नहीं हुई, कहीं पर भी चिंतित नहीं हुई। और जब सिक्योरिटी पे पहुंची तो उन्हें स्पेशल तरीके से रास्ता दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ़्लाइट के लिए लेट हूँ और मुझे चेकोस्लोवाकिया जाना है। और इस तरह से उन्होंने हमें एक तरह से प्रेरणा दी कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो आप स्थिर रहकर जो भी हो रहा है उसको देखें और अपने आप को चिंता में अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें। अब हम आज का जो डिस्कोर्स था उसके ऊपर आते हैं। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जगह नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपना पहला ज्ञान बांटा। तो उन्होंने बताया किस तरह से हम सबका भला हो सकता है, और जो लोग इसके लिए तैयार थे उनको उन्होंने तरीका भी बताया। तो उन्होंने लगभग 45 साल निब्बाण प्राप्ति के बाद अपनी शिक्षा को बांटने में लगाए। उनके परिनिब्बाण प्राप्त होने के बाद भी उनकी जितने भी शिक्षा है उनको अलग अलग देशों में सिखाया जा रहा है, और ये धीरे धीरे श्रीलंका, तिब्बत, जापान, चाइना और अभी ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया है। तो इसी तरह से अजान का जन्म एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ, और एक संयोग था
कि वो अजान सुमेधो के संपर्क में आए और वहाँ पर उनको बुद्धिज़्म के बारे में पता चला। और 2500 साल के बाद भी उनको लगा कि जो भगवान बुद्ध ने तब कहा था वो आज भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण और कारगर है जितना कि उस समय के लोगों के लिए था। तो उनको ज़रा भी हिचक नहीं हुई अपना पूरा जीवन जो है वो एक मोनेस्टिक लाइफ में डिवोट करने के लिए, और वो अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं। और अब वो 21वीं सदी में वहाँ हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। और उनको थोड़ा सा ये भी लगता है कि कहीं उन्होंने अंग्रेज़ी का वर्ड चीट यूज़ किया कि ये क्या संयोग है कि मैं वहाँ वो पढ़ाने आ रही हूँ जो यहाँ पे ही ज्ञान उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसी से एक और चीज़ जो समझ में आती है वो ये कि ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, ये जो प्रणाली है, ये एक सीधे तरीके से हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप खुश होना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये मददगार होगी। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो भी ये गारंटीड नहीं है कि हम खुश होंगे। तब भी हमारे मन में डर, शंकाएं और अलग अलग तरह के मानसिक दुख हो सकते हैं। तो हम इसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं कि मानव को एक तरह की आदत हो गई है अपने जीवन को मुश्किल और नाखुश करने की। और ना सिर्फ हम अपने आप को भी बट औरों को भी नाखुश करते हैं। और जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, जो उनके ज्ञान है, उसके अंदर हमें अपने आप को और औरों को खुश रहने का तरीका बताया गया है। तो हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जब भी हमारे सामने हमारा दुख से सामना हो तो बहुत ही सिंपल है कि हमें उस दुख को समझना है, उस दुख के कारण को समझना है और फिर तैयार रहना है उस दुख के कारण को छोड़ने को। मन की शांति प्राप्त तब होती है जब हम अपने मन को इस क्षण में लेके आते हैं। जो कुछ भी है वो अभी है, इसी वक्त है, और हमें इस क्षण के अंदर पूर्णतया विलीन होना है। कोई व्यक्ति दुख, चिंता, गुस्सा, विवेक को खोना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं करता। लेकिन अगर कोई भी हमारे शरीर या मन की स्थिति हो, अगर हम ये नियमित तरीके से प्रैक्टिस करें कि हमें उसमें दृष्टा भाव बना के रखना है, हमें उसमें सजग रहना है, तो फिर हमें प्रगति ही मिलेगी। और जैसे मैंने कहा कि अगर इस रिट्रीट से अगर आप अपने लिए कोई एक चीज़ भी ले लेते हैं तो वही आपके जीवन को एक अलग मोड़, एक अलग रास्ते पे लाने के लिए, एक सुखमय रास्ते पे लाने के लिए काफ़ी हो सकता है। जैसे अजान सुमेधो के साथ जो पहली रिट्रीट थी, उसमें मुझे मेत्ता, लविंग काइंडनेस, नॉन एवर्जन, नॉन इनविल, द्वेष भाव को छोड़ना, और ये एक चीज़ प्राप्त की मैंने रिट्रीट से, और वही मेरे लिए मेरे जीवन को एक सही रास्ते पे लाने के लिए काफ़ी थी। अब जो मेत्ता है वो हम हर परिस्थिति में, हर एक के पास ये हर व्यक्ति के पास ये संभवतः कैपेबिलिटी नहीं होगी,
लेकिन भगवान बुद्ध ने इसको एक उदाहरण के तौर में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर आपको चोर पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो आपके पाँव और हाथ को आरी से काटते हैं, उस स्थिति में अगर आपके मन में एक भी द्वेष भरा भाव, एक भी द्वेष भरा विचार आ गया, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं समझा है मेरी शिक्षा में। तो क्योंकि अजान क्रिश्चियन हैं तो उनको इस संदर्भ में उनके अपने धर्म, अपने पुराने धर्म क्रिश्चियनिटी से भी कुछ प्रोत्साहित बातें मिलती हैं। जब जीसस को क्रूसिफाई किया गया और उन्होंने तब भी कहा कि फादर forgive them because they don't know what they are doing। हे प्रभु, इन सबको क्षमा करना क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेहता जो है ये बहुत ही शक्तिशाली एक क्वालिटी है मन की, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, विश्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सवाल ये आता है कि हम किस तरह से उन लोगों से और उन परिस्थितियों से निपटें जबकि वो हमारे सहायक नहीं है, जब हमें उस परिस्थिति में वो नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं। तो किस तरह से हम मेहता लेके आए उन लोगों की तरफ जो हमारे सहायक नहीं है। तो उसके अंदर जो चीज़ हेल्पफुल होगी वो ये कि अगर हम इल विल रखते हैं तो वो जो द्वेष भाव है, वो द्वेष भाव किसी रोग की तरह है। जब भी हम द्वेष भाव रखते हैं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने कभी हमारे चाहने वालों को या हमें नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन उस वजह से अगर हम द्वेष भाव रखेंगे तो वो द्वेष भाव दूसरे से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को नुकसान देता रहेगा। तो किस तरीके से हम द्वेष भाव से दूर रह सकते हैं? तो अजान ने कहा कि जो उन्हें बहुत सफलता प्राप्त होती है जिस तरीके से उनकी साधना के अंदर, वो है कि मेहता का जो चांट है, मेहता का जो गान है, और उसको अपने अंदर से सब तरफ फैलाना, जिससे कि जो हम औरों को दे रहे हैं वही हम अपने आप को भी दे रहे हैं, जो हम चाहते हैं वही हम औरों को दे रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ यही बात मान लें कि हम अपनी क्रोध को मेहता भाव से, अगर हम क्रोध निकाल के उसकी जगह मेहता भाव रख लेते हैं, तो उसी से हम एक अलग रास्ते पे चल सकते हैं। दूसरा ये कि अगर मुझे क्रोध है तो क्या मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंची है। फिर उन्होंने अपने कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया कि नन कम्युनिटी में अजान बहुत सीनियर हैं और वहाँ पे अलग अलग देशों से बहुत नन्स हैं, तो सबकी भाषा अंग्रेज़ी नहीं है। उस वजह से उनके अंदर आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर अजान को वो कहते हैं कि उनकी वजह से ये सब गलतियाँ हुई हैं। और उस समय पर अगर अजान को ये याद रहता है, या वो याद रखती हैं कि अगर उन्होंने किसी को चोट पहुँचाई है तो क्या वो अपने आप को माफ़ कर सकते हैं, और अगर वो अपने आप को माफ़ कर सकती हैं तो वो अपने आप की तरफ मेहता भाव लेके आती हैं, और उस मेहता भाव से संभव होता है कि वो औरों के लिए भी मेहता भाव अपने अंदर लेके आए। तो हमारे बहुत सारे जो द्वेष के कारण हैं, मुश्किल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में का सामना करने से हैं, जहाँ पर हमें गुस्सा आता है, तो वहाँ पर अगर हम इस बात को समझते हैं कि हम भी उस परिस्थिति में किसी को दुख पहुंचा सकते थे या किसी का नुकसान कर सकते थे, और ये अगर हमें समझ में आता है कि कोई और कर सकता है और हम कर सकते हैं, तो हमें ये भी समझ में आ सकता है कि कोई और भी कर सकता है। और जब हम सब मनुष्य जाति को एक तरह से उन्हीं चीज़ों से जूझते हुए पाते हैं जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है उनको उनकी तरफ मेहता भाव लेके आना। जैसे कि हम अपने भाई बहनों को इतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनके ऊपर
कोई भी जुल्म नहीं कर सकते, लेकिन जब हम एक कुछ मनुष्यों को अपने एग्रेसर की तरह या अपने दुश्मन की तरह देखते हैं तो फिर उन्हें हर्ट कर पाना बहुत आसान है। तो अजान ने फिर बताया कि ये जो मेत्ता भाव है ये ब्रह्म विहार का पहला छंद कहेंगे, पहला भाग है, पहला ब्रह्म विहार है। तो ब्रह्म विहार में उन्होंने थोड़ा बताया इसके बारे में कि ये ऐसे बीइंग्स, तो देवलोक में उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मेत्ता भाव जो हर तरफ, मतलब इतना कि उसका कोई लिमिट नहीं है, जो वो हर डायरेक्शन में, हर दिशा में वो प्रवाहित करते हैं अपने अंदर से। तो हमें भी ये जो क्वालिटीज़ हैं अपनी साधना के अंदर उनको अपने आप को परिपक्व करना है ताकि हम इनको उत्पन्न कर सकें और अपने जीवन के अंदर इनको धारण कर सकें और इनके उदाहरण पेश कर सकें। तो हमें द्वेष भाव को एक तरह से छोड़ना है, किसी से बदला लेने की भावना को छोड़ना है और उसकी जगह खुशी और एक उन्माद, एक अच्छा भाव लेके आना है। तो ये जो मेत्ता भाव है ये बहुत सीधे तरीके से हमारे पेशेंस, हाँ धैर्य, तो ये सीधा सीधा हमारे धैर्य का के साथ मेत्ता और धैर्य का आपस में संबंध है। जैसे हम बैठे हुए हैं और साधना कर रहे हैं और हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो क्या हम अपने आप को कह सकते हैं कि मे दिस बीइंग बी वेल, कि ये मनुष्य सलामत हो, ये मनुष्य कंफर्टेबल हो। तो अगर हम इस रिट्रीट में भी अपने ऊपर ये करेंगे, अपने इस परीक्षण को कर सकते हैं, तो इसी से हम जो चिंता और ये साधना का समय कब समाप्त होगा, इस जगह से उठ करके हम इस साधना के समय में पूरा फायदा उठाने का लाभ ले सकते हैं। फिर दूसरा भाग ब्रह्म विहार का जो है वो है करुणा, और करुणा का उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बताया कंपैशन, जो कि बहुत बार गलती होती है कि कंपैशन को दया मान लिया जाता है, पिटी मान लिया जाता है। ओ यू पुअर थिंग, अरे आपके साथ क्या हो गया, मतलब एक तरह का दया का भाव लेना ना, जो कि हम में से कोई भी पसंद नहीं करेगा। हम लोगों को किसी की दया की भीख नहीं चाहिए। और जो करुणा है वो एकदम अलग भाव है। और करुणा को समझ लेना ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और दया का भावना व्यक्त करके अगर वो समझना चाहे कि हम उस समय क्या महसूस कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ये एक हमारे साथ होने की, हम जो महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करने की क्षमता हो, तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है और हम उसको एकदम से समझ सकते हैं कि हाँ ये करुणा है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप बीमार हैं तो आपके पास लोग आएंगे और जब लोग आते हैं तो अलग अलग तरह से भाव व्यक्त करते हैं और अधिकतर उनमें से दया का भाव व्यक्त करते हैं, जो कि हमारे लिए सहायक नहीं होता। लेकिन अगर वहीं पर हम करुणा का भाव व्यक्त करेंगे तो हम उसकी परिस्थिति को, जैसी परिस्थिति है उसके साथ एक हो जाएंगे। हमें समझ में आएगा कि ये परिस्थिति है जहाँ पे एक तरह का बहुत ही असहाय स्थिति है, इस स्थिति में कुछ कर पाना संभव नहीं लग रहा है। तो उसी को जब हम अपने आप सक्षमता दिखाते हैं उसे समझने की, उसके साथ एक होने की, तो वो एक अलग तरह की सहायता उस व्यक्ति के लिए होगी। तो
ये कभी कभी ज़्यादा शक्तिशाली तरीका होता है किसी की मदद करने का, बजाय इसके कि हम कहीं पहुँचें और सिर्फ इसलिए कि कुछ करते हुए दिखना चाहिए इसलिए हम कुछ करने लग जाएं। उसके बाद जो तीसरा ब्रह्म विहार है वो है मुदिता। तो मुदिता दूसरों के अच्छे भाग्य के लिए ये कैसे उत्पन्न की जाए, मैं कैसे खुश हूँ जब किसी और के पास कुछ मिले। तो इसका एक अजान ने जो रास्ता बताया वो ये कि अगर मैं उन चीज़ों के लिए खुश हूँ जो मेरे पास है, जो मेरे भाग्य में मेरे पास वस्तुएं हैं, जो मेरे पास संपदा है, अगर मैं उसे याद करूँ तो फिर मेरे लिए आसान होगा दूसरों के भाग्य के लिए, दूसरों के अच्छे भाग्य के लिए खुश होना। आज का जो समय है उसके अंदर बहुत ही कंपटीशन है, तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छा पढ़ें, हमारी टीम जो है वो सबसे आगे आए, जीते। और इस सब में इस बात को समझ पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन संभव ज़रूर है। फिर अजान ने ईर्ष्या के बारे में बताया कि ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जैसे कि बहुत कम लोग मानते हैं कि उन्हें ईर्ष्या हो रही है, और इसे दिखाना सही नहीं माना जाता, तो आमतौर पे इसको ढक लिया जाता है। फिर अजान ने बताया कि जब वो नन बने उनसे पहले उनका जो बॉयफ्रेंड था उसको मालूम हो जाता था कि जैसे ही ये अपसेट होते तो वो इंसिस्ट करता कि नहीं बताओ किस वजह से आप अपसेट हो, और उस प्रोसेस में जब तक वो सही कारण नहीं बताते थे तब तक वो एक तरह से छोड़ता नहीं था, और फिर उसके बाद वो उसे गलत या सही नहीं कोई संज्ञा देता था, वो जैसा जो उन्होंने बताया उसके साथ वो ठीक होता था। तो इस तरह से अजान अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं कि उनको ये मौका मिला कि वो अपने ईर्ष्या भाव को व्यक्त करके उससे आज़ाद होने का एक रास्ता पहले ही जानते थे। फिर उन्होंने बताया कि इसका एक तोड़ है, और वो तोड़ है कि आप जब भी आपको ईर्ष्या हो तो आप अपने भाग्य में मिली हुई वस्तुओं को, प्रियजनों को, जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है उसको याद करें, और उससे आपको खुशी का भावना आपके अंदर जागेगी। चौथा जो भाग है ब्रह्म विहार का वो है उपेक्षा। उपेक्षा को समझने के लिए कि हमारे हृदय के अंदर खुशी जो सबसे प्रबल खुशी है मनुष्य के लिए, मनुष्य जगत में जो सबसे हाईएस्ट खुशी है, सबसे ऊंची खुशी है, उसको भी हम महसूस कर सकें, और जो सबसे प्रताड़ित करने वाला दुख है उसको भी हम उसका भी हम एक तरह से संवेदन कर सकते हैं। तो ये भगवान बुद्ध में था कि उन्होंने दोनों एक्सट्रीम्स, दोनों चरम देखे थे, सुख के भी और दुख के भी, और दोनों में ही वो सक्षम थे उनको सहन करने के लिए। लेकिन हम सब के लिए हो सकता है इस समय ये संभव ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचाने का भी एक रास्ता हमेशा अपने पास रखें। जैसे देखा होगा कि एक सुनामी आई, वहाँ पे बहुत से लोग मदद करने के लिए गए, लेकिन जब उन्होंने जो देखा उसको वो उसमें अपने आप को नहीं संभाल पाए। तो फिर अजान ने वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा कि उनको कोई मदद करने वाला है, कोई सहायक है जो उनको बताए कि किस तरह से इस तरह की स्थिति से निपटा जाए। तो कुछ लोगों के पास अपने अपने रास्ते थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिनके पास कोई रास्ते भी नहीं थे। तो उन परिस्थितियों में उन लोगों को मदद की ज़रूरत है। फिर बहुत सी मूवीज़ के अंदर जो अजान देखते थे जब वो नन नहीं बने थे, तो उसमें बहुत सारे एकदम ग्रूसम एक्ट्स होते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उसके अंग काट दिए, कुछ कर दिया। तो ये सब
जो है वो नहीं देख पाते थे, तो इसलिए उनका तरीका क्या था कि उस तरह के चलचित्र से वो दूर रहते थे। अब जो उपेक्षा है उसको अंग्रेजी में एक शब्द है इंडिफरेंस, उसको इंडिफरेंस की तरह नहीं ट्रांसलेट करना चाहिए, क्योंकि वो उसका मतलब ये हुआ कि हम संवेदनशील नहीं है, हम बिना कुछ देखे, जैसे सड़क पे कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा था हम दूसरी तरफ देखते हैं, उसी तरह से हम इंडिफरेंट हो जाते हैं और फिर हम जो दुख है उसको अपने से एक हाथ की दूरी पर रखना चाहते हैं। तो जो सबसे ऊंचा स्तर उपेक्षा का है उसमें आप संवेदनशील भी हैं, चरम सीमा पे आपकी संवेदनशीलता है और चरम सीमा पे ही आपका जो आपकी क्षमता है उसे सहन करने की, और ये एनलाइटनमेंट का 7वां एक कारण बताया गया है। अगर आप अभी इस स्थिति में नहीं है कि आप उस तरह के चरम सीमा के दुख को सहन कर सकें, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे साधना के साथ ही ये सब आपके लिए डेवलप होगा। तो ये अजान के कुछ शब्द थे हमें प्रेरित करने के लिए और अपने मन में वो भाव लाने के लिए जो कि हमारे साधना के रास्ते में हमारे सहायक होंगे।